The day you stop doing Botox, this is how your face is going to look. आप अपनी उम्र से 10, 15, शायद 20 साल भी ज्यादा बड़े लगेंगे and that is a reality that no one talks about. I don't do Botox. Obviously, you can tell. But अगर आप Botox कराना चाहते हैं, आप fillers कराना चाहते हैं, you are exploring this arena, then this is a video that you must watch. Because आज मैं आपको दूंगी top 5 things that you should know before you do Botox. इसके बारे में dermatologists कभी बात नहीं करते because this will directly hit their business. इसके बारे में mostly content creators भी बात नहीं करते. Definitely those who do Botox and fillers don't talk about the side effects, don't talk about the things that you should be knowing before you walk into that doctor's clinic. So आज ये है एक डिटेल्ड वीडियो. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड. मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट. टुडे इज ऑल अबाउट बोटॉक्स एंड फिलर्स, all the things that you need to know before you walk into the doctor's clinic. वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मैं बनाती हूँ डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स और स्किन केयर रिलेटेड साइंटिफिकली बैक्ड वीडियोस हफ्ते में 4 बार, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडेज. अब करते हैं वीडियो को शुरू. फर्स्ट थिंग, लेट मी प्रीफेस. यहां मैं किसी को शेम नहीं कर रही हूं. आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट डोंट डू बोटॉक्स, इट्स अ रियली बैड थिंग. आपकी मर्जी है, आपका चेहरा है. डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, डू व्हाट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट. बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर वी डू एनी काइंड ऑफ अ प्रोसीजर, वी नीड टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट. वी नीड टू नो द इफेक्ट्स एंड द साइड इफेक्ट्स so that later in life we don't have much regrets. So the first thing that I want to talk about is what is Botox. Now Botox basically procedure का नाम नहीं है, Botox है नाम ब्रांड का. ये जो इंग्रेडिएंट जो आपके मसल में इंजेक्ट किया जाता है, जिसे कॉमनली बोटॉक्स कहते हैं, दैट इज अ न्यूरोटॉक्सिन. एंड इस न्यूरोटॉक्सिन के बहुत अलग अलग ब्रांड्स आते हैं. बोटॉक्स इंजेक्ट किया जाता है एपिडर्मिस के नीचे मसल में, एंड जब ये इंजेक्ट किया जाता है एक एरिया में, ये इस एरिया को फ्रीज कर देता है एंड बेसिकली मसल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. तो अगर आपके रिंकल्स हैं वो दिखेंगे नहीं. अगर आपके बहुत सारे फेशियल लाइंस हैं, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, फेशियल मूवमेंट की वजह से कुछ है, वो सब नहीं दिखता. योर फेस लुक्स ब्यूटिफुली snatched and tight. ये है बोटॉक्स. बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, अलग अलग डर्मैट्स के पास अलग अलग ब्रांड्स मिलते हैं. अब आ जाते हैं सबसे पहली चीज पे, which is something that no one talks about, and that is Botox is expensive. और मैं पहली बार बोटॉक्स प्रोसीजर करने के बारे में नहीं कह रही. आई एम टॉकिंग अबाउट योर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ बोटॉक्स. नाउ अंडरस्टैंड, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर and having almost 1 million people strong community between TikTok and Instagram and Facebook, I can get Botox for free. Literally हफ्ते में एक या आधी बार, 2 बार तो definitely कभी कभी. I have so many clinics in the UAE that reach out to me who are willing to do fillers, Botox, lip fillers, eyelash. They can do whatever procedure I want on my face for free. And yet I don't do this. And this is why. Because you need to understand कि Botox एक one time treatment नहीं है कि हमने आज करा लिया, we are looking amazing, इसके बाद हम नहीं कराएंगे. It doesn't work like that. Because Botox is temporary. जब आप पहली बार Botox कराते हैं, it will last you maybe for 8 to 9 months. हो सकता है 1 साल भी लग जाए आपका Botox लास्ट करे. You're feeling very tight and snatched. But because it is a neurotoxin, and ये जरूरी है, वर्ड टॉक्सिन इज इंपॉर्टेंट. जब हम बॉडी में कोई भी टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी क्रिएट करती है रेजिस्टेंस उस टॉक्सिन को फाइट करने के लिए. एंड दैट मीन्स के ईयर ऑन ईयर, एवरी फ्यू ईयर्स आपको वो बोटॉक्स बार बार कराना पड़ेगा. सो मे बी फर्स्ट ईयर, इफ यूर अ बिगिनर, आप पहली बार करा रहे हैं, आपका बोटॉक्स हो सकता है 1 साल तक भी लास्ट कर जाए. सेकेंड ईयर, यू माइट नीड टू डू इट ट्वाइस अ ईयर. थर्ड ईयर, यू मेट नीड टू डू इट थ्राइस अ ईयर. एंड बोटॉक्स की कॉस्ट भी बढ़ रही है. बोटॉक्स 1 ml के हिसाब से दिया जाता है टू योर एनी पार्ट ऑफ योर फेस. 1 ml की कॉस्ट, एंड आई विल टेल यू इन डॉलर्स सो यू कैन कन्वर्ट इन व्हाटएवर करेंसी यू वांट. अच्छे क्लिनिक में, थोड़े खराब क्लिनिक में, इन जनरल 1 ml ऑफ बोटॉक्स विल कॉस्ट यू एन एवरेज ऑफ $100. मेरे फेस पे, क्योंकि मैंने कंसल्टेशंस कराई हैं बिफोर आई एक्चुअली मेड दिस वीडियो, मेरे फेस पे फॉर ऑल ऑफ these muscles, Botox and filler मुझे चाहिए कुछ 12-15 ml. So that means I will be spending $1,500. $1,500 एक बार. अगले साल $3,000. तीसरे साल $4,500. And I'm at the age of 37. Let's say कि मैं Botox, कराती हूँ till the age of 60. That's 23 years. 23 years into 4,500, an average of 3 times a year. You know the math. It is going to be very, very expensive because Botox is
temporary. And this brings me to problem number 2, because a lot of times people think कि नहीं हम तो थोड़े साल ही कराएंगे, उसके बाद we don't want to do this. My love, you get so used to seeing your face tight, snatched and beautiful कि जैसे ही वो Botox wear off करेगा, आप भाग के जाओगे back to your doctor and you will want to get it again and again. That is problem number 2. Botox is temporary. And now let's come to problem number 3, जो actual में एक real problem है, which is the face dump. अंडरस्टैंड, बोटॉक्स किया जा रहा है आपके मसल्स में इंजेक्ट, इससे आपके मसल्स मूव नहीं कर रहे. जब एक मसल बिल्कुल भी मूव नहीं करता तो क्या होता है, मसल बेसिकली मूव करना, उसकी प्रैक्टिस ऑफ मूवमेंट एक्सेट्रा खत्म हो जाती है. फिर जब आप बोटॉक्स को एकदम से छोड़ देते हैं, वो मसल जिसने सालों से काम नहीं किया है, नाउ सडनली दैट मसल नीड्स टू वर्क एंड उस वजह से आपको होता है फेस डंप. दिस इज द पोस्ट बोटॉक्स फेस डंप व्हेन यू स्टॉप डूइंग बोटॉक्स. आपने अगर 10-15 साल के बाद बोटॉक्स बंद कर दिया, यू विल लुक एटलीस्ट 15 to 20 years older than your actual age because all of your muscles will suddenly sag. आपके मसल्स को आदत नहीं है ऑफ वर्किंग, सडनली उन्हें काम करना पड़ रहा है. द बेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज जब हम जिम जाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आवर बॉडी इज टाइट, इट्स स्नैच्ड. यहीं आप जिम विम जाना छोड़ दें, घर पे बैठ जाएं, डोंट डू एनी एक्सरसाइज, फ्लैश लटक जाती है, मसल्स के साथ फ्लैश लटक जाता है. दैट हैपन्स टू योर बॉडी एंड दैट विल हैपन टू योर फेस. सो अंडरस्टैंड, अनलेस यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस थ्रू आउट योर लाइफ साइकिल, एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि अब दवाइयाँ ठीक ठाक हो गई हैं, हेल्थ केयर इज गुड, एवरेज एज लाइक एवरेज एज ऑफ पीपल लिविंग बढ़ गया है अब दुनिया में, राइट? सो इफ यू आर गोइंग टू से कि हम 70 तक नहीं कराएंगे, हम 60 तक कराएंगे या 50 तक कराएंगे, एट द पॉइंट ऑफ 50 व्हेन यू स्टॉप डूइंग बोटॉक्स यू विल लुक लाइक 70. एंड अगर आप प्रिपेयर्ड हैं टू मेक दैट चेंज, देन दैट इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर. नाउ लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 4. एंड ओ माई गॉड, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम दैट नो वन टॉक्स अबाउट. नंबर 1, आपको जाना है टू एन एक्सपीरियंस्ड इंजेक्टर. सो अगर आप बोटॉक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, डोंट रियली जस्ट गो बाय व्हाट अ कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर इज सेइंग. टॉक टू पीपल हु यू रियली ट्रस्ट एंड गो फॉर मल्टीपल कंसल्टेशंस. बिकॉज अंडरस्टैंड, बोटॉक्स इंजेक्ट डॉक्टर्स करते हैं, डर्मैट्स करते हैं, एस्थेटिशियंस नहीं करते. एंड द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर लेट्स से यू गॉट द बेस्ट डॉक्टर इंजेक्टिंग यू विद बोटॉक्स, ये है तो मसल, और मसल में होती है मूवमेंट. कभी कभी लोगों का बोटॉक्स शिफ्ट कर जाता है नेचुरली. समटाइम्स इट्स नॉट इवन द डॉक्टर्स फॉल्ट, इट इज रियली हाउ योर बॉडी और योर स्किन रिस्पॉन्डेड टू इट. मसल कर बोटॉक्स कर गया आपकी बॉडी में शिफ्ट, and now you're looking like this. और ये हम सब ने देखा है. We've seen this on actresses, we've seen this on various other celebrities where you look at them and you're like, oh my god, what did this person do? इतनी अच्छी लगती थी, now she's looking like a duck or she's looking bloated or whatever. Sometimes Botox just goes wrong. Now let's talk about problem number 4. Again, this is actually problem number 5, but this is more related to fillers. अब understand, fillers किए जाते हैं कुछ areas में जहाँ पे बोटॉक्स नहीं किया जाता. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोटॉक्स एंड फिलर्स. बोटॉक्स मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, राइट? तो मसल में डालते हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई. फिलर्स उस एरिया को प्लम्प करता है. तो अगर आपकी संकन आईज हैं, कुछ अंदर चली गई हैं, कुछ लोगों की हेरिडिटरी होती हैं, सम पीपल फेस संकन आईज बिकॉज ऑफ एज. नाउ यहाँ पे बोटॉक्स नहीं होता, यहाँ पे फिलर्स किए जाते हैं. इस एरिया में नेजोबियल फोल्ड्स में भी बोटॉक्स और फिलर्स का कॉम्बिनेशन किया जाता है. लिप्स में फिलर्स किए जाते हैं. और फिलर्स जो होते हैं काफ़ी टाइम नेचुरली डिसॉल्व हो जाते हैं, बट समटाइम्स व्हेन यू नीड टू डू फिलर अगेन, आपको उसे डिसॉल्व करना पड़ता है. एंड दैट इज अ पेनफुल प्रोसेस, एंड फिलर्स आर मोर प्रोन टू मूविंग हियर एंड देयर ऑन योर फेस एंड गिविंग यू सम रियली रियली अगली रिजल्ट्स. So problem number 4, which is common between Botox and fillers, is कि it can shift, it can go wherever. उसके dissolving में problem होगी, fillers के dissolving में problem होगी, especially if you've got lip fillers. I have heard lot of videos where people have said the process of dissolving lip fillers has been more painful than childbirth. And for any of the ladies who are watching me who have gone through childbirth, you know exactly what I'm talking about. If it's more painful than that, then you know it's really painful. You have to decide whether it's worth going through that pain in the whole process.
एंड प्रॉब्लम नंबर 5, विच इज अ 1% प्रॉब्लम, यानी हर इंसान को नहीं होता, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप बहुत रेगुलरली बोटॉक्स कराते हैं, योर बॉडी स्टार्ट्स रिजेक्टिंग इट, एंड दैट रिजेक्शन फ्रॉम योर बॉडी comes in the form of allergies, headaches, nausea, vomiting and a lot of other side effects. ये होता है कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम बोटॉक्स के बाद भी, जिनकी बॉडी उसे इमीडिएटली रिजेक्ट करती है, उस टॉक्सिन को इमीडिएटली रिजेक्ट करती है, और कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि लोगों को ये सालों के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है. दिस इज कॉमन बिटवीन बोटॉक्स and between fillers, and this is one primary reason why people want to get their fillers dissolved before time, or they don't want to continue with it. So these are the top 5 reasons that you should consider before you decide to do Botox and fillers. Number 1, it's expensive. सिर्फ first time use की बात नहीं कर रही. You have to consider the lifetime value because it is temporary. आपको ये बार बार कराने का मन करेगा. And I can tell you this, I went through something called keratin addiction. Now, what is keratin addiction? Keratin is basically a hair treatment, right? And मैंने keratin कराना शुरू किया था sometime in 2016, and I initially did it once a year, then twice a year, and I've always done it twice a year. Every time my keratin would wear off, I would want to go and get it done again because मुझे आदत हो गई थी of my hair being super soft, super silky. But the fact of the matter is, जब वो keratin आपके बालों से उतरता है, आपका natural fiber बालों का damage होता है. And I've had to work really hard on my hair care routine to not fall into this keratin trap over and over again. So understand there is something called addiction when you get used to seeing your face in a certain way. Number 3, it can go wrong अगर आपके muscle movement में हो गई या अगर आपका injector सही नहीं हुआ. Number 4, इसको dissolve करना is painful, especially if you're looking at dissolving your fillers. It is very, very painful. And number 5, your body is going to reject it. Either your body is going to reject it by having side effects, or the day you stop using it, you will look really, really old as per your age. You'll not look like your biological age. You will look much, much older. Having said that, this video comes without judgment. This is not a channel. This is not a space for judgment. तो अगर आप Botox कराना चाहते हैं, fillers कराना चाहते हैं, I will celebrate that with you because I'm not here to tell you what you should do, what you should not do. All I'm here to tell you is what you should know before you do something. I've never done any procedures on myself. But a few months ago, about 2 months ago, मैंने एक लेज़र ट्रीटमेंट कराया था जो भी मेरे लिए फ्री था. So मैंने ये लेज़र ट्रीटमेंट कराया था which is the Photona 4D laser, which is a treatment जो आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, आपके थोड़े बहुत अगर चेहरे पे मार्क्स हैं तो उसमें हेल्प करता है. And basically it is a laser treatment जिसका मुझे रिजल्ट पर्सनली बहुत अच्छा लगा. And given the fact that I already have good skin, I love the impact of the Photona 4D laser. So अगर आप देखना चाहते हैं वो उस process की पूरी detailed video, that is what I'm going to link right here. Take a look, make the decision with information. I will see you next time. Don't forget to subscribe. Take great care of yourself. Bye.